my most highest rated performance of mine is Simmba. 83 had its own sets of challenges. I think a new challenge for me. So far you've had the leeway of making creative choices because you don't have certain parameters to fit. So बॉलीवुड लाइफ के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट रसूल बिसलवा और जो मेरे साथ आज मौजूद है इनको मैं ये तो सुपरस्टार है ही, लेकिन इनको मैं एक कैमिलियन के नाम से मैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, चाहे वो रामलीला हो और चाहे वो सिम्बा हो, और अभी कपिल देव के किरदार में जो उन्होंने कमाल किया है, यानी कि 6 बॉल में 6 छक्के कोई मारे, वो है रणवीर सिंह। तो वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। रणवीर, आई मस्ट टेल यू, हम लोग अभी इतनी अच्छी बातें जो भी करेंगे 83 के बारे में, बट व्हाट आई वांट टू नो इज दैट एज एन एक्टर, when you see Simmba, when somebody goes to see Simmba, for me, I must tell you frankly, for me, my 3 favorite films of yours are Simmba, 83, and Dil Dhadakne Do. These are my 3 favorite Ranveer Singh movies. I know थोड़ा सा क्या बात है, लोग अक्सर पद्मावत बोलेंगे, लोग अक्सर बाजीराव मस्तानी बोलेंगे, लेकिन for me this is the full range of Ranveer Singh, इसलिए ये 3 मेरे फेवरेट है। तो अगर if you just take this example of these 3, सिम्बा में जो लोग देखेंगे बोलेंगे अरे ये तो पूरा रोहित शेट्टी वाला एक्टर है, मजा आ जाता है। फिर लोग सोच भी नहीं सकते कि आप दिल धड़कने दो में इतना सबड्यूड परफॉर्मेंस दोगे और फिर 83 में आप घुसोगे ऐसे कैरेक्टर में कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। सो माय पॉइंट इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू दिस एंड हाउ अमेजिंग एंड फुलफिलिंग द एक्सपीरियंस इज। वी वुड लाइक टू हियर। रसल जी, एक तो आप जब भी मेरे बारे में कुछ बोलते हैं, मेरी फिल्मों के बारे में कुछ लिखते हैं, तो एकदम दिल को छू जाती है। जो आपने थिएटर से निकल के ट्वीट किया, that was exactly the kind of emotional response that we were seeking from the audience. I was so happy to read that, so thank you so much for that. Really, I cannot thank you enough for that, because that was one of the first reactions that came out from the initial press screenings, and we were like, this is it, this is what we've been hoping and praying for. So thank you for that, and thank you even more for pointing out those performances that are kind of underrated, in the sense that personally, you ask me, my most highest rated performance of mine is Simmba. Yes, लोग समझते नहीं है कि आप ड्रामा भी करते हैं, आप सटल भी हो सकते हैं, लेकिन मास फिल्म में हाई पिच अडॉप्ट करके, प्ले टू द गैलरी करके, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस लेके आना, दैट टेक्स सम स्किल। अब सिम्बा को कुछ साल हो गए, तो मैं उसके बारे में नॉट मेकिंग इट कैरिकेचरिश, मतलब फॉर दैट कैरेक्टर टू लैंड एंड फॉर द फिल्म टू लैंड is a skill that is very difficult. The reason I had Simmba so high is because difficulty level of Simmba is higher for me, and people will be surprised to know that's the tough one. That's what's very very tough to crack. दूसरे yes, आप बहुत मुश्किल होता है, and they each have their challenges and difficulties, and nothing is really easy. But this, आप जितना भी ट्राई कर लो, क्रैक होता ही नहीं है। That's why people consider the mass masala genre as the holy grail for a mainstream Hindi film actor, is because आप सब कुछ कर लो, लेकिन वो जो एक चीज है ना, वो जो आप ये करके दिखाओ, that's like वीडियो गेम होता है ना, तो लेवल्स होते हैं कि हाईएस्ट लेवल है। तो it's very now that some years have passed, I am more and more convinced that was the most skilled one, and that was the most difficult one to crack, because it's not, that one is not easy. But I'm really happy that you said Simmba. Dil Dhadakne Do, because I was part of an ensemble cast, it often goes unnoticed, but that kind of internalization was also something that I had to learn as I went along. I have a background in theatre, so my default mode was very theatrical. And I would give myself points for that, for Lootera as well, because
those are things that I had to learn on the job, on the fly, and execute. So pat myself on the back for that. And 83 had its own sets of challenges. I think a new challenge for me. Okay, so far you've had the leeway of making creative choices because you don't have certain parameters to fit. पर ये तो एक लिविंग लेजेंड है. आपको कपिल देव का रोल करना है. वो जिस तरीके से चलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, जिस तरीके की उनकी भाषा है, लोग उनकी पर्सोना को जानते हैं. तो आपका एक direct comparison or there is already an exist page and you have to bring yourself blend into that. You're not free to make any creative choices. There are set parameters within which you have to work and deliver. So a new challenge for me, but I relished it. I was up to it and I put in the work that never felt like work because it was just such a joy to this entire process. Cricket khelna, Kapil sir ke sath spend karna, but the way the reception to the performance is something that even I'm surprised, astonished by. I was like, सोचा था even the film and the performance, हमने सोचा था दिल से बनाएंगे, अच्छी बन जाएगी, लोगों को अच्छी ही लगेगी, कितनी अच्छी स्टोरी है. लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ है, it's become something beyond our wildest imagination. I don't think any of us, Kabir sir, myself, any of the cast members, I don't think we've received this volume of love for anything we've ever done before. It's a crescendo. Before go to my next question, आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपने लुटेरे का जिक्र किया अभी, तो I mean, if I just knew it you were, I would have bought it with me. I have my Lootera Platinum वो edition, वो DVD है मेरे पास, अभी घर पे है. So yeah, क्या बात है सर. I love सर वो रखने लायक चीज है. जिस महेंद्र शेट्टी ने उस फिल्म शूट किया, वो तो मतलब जिंदगी भर मेरी फिल्मोग्राफी का एक नगीना होगा. लिटिल टाइम ऑफ अ फिल्म लुटेरा. उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन 10 साल बाद लोग अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं. आपको ये सर प्लैटिनम डीवीडी रखी है, आप कितनी लिरिकल, कितनी रोमांटिक, कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई विक्रमादित्य ने. और I was disappointed at the time that it came out कि यार ये I was a new actor and I was not so mature or evolved. I didn't realize कि यार पैसा बहुत सब कुछ नहीं होता. प्यार भी कुछ चीज होती है, इज्जत मेन चीज होती है, प्यार और इज्जत. और वो कितना ही कमाया फिल्म ने. It was the best reviewed film of its time and it received so much love and it continues to receive love even so many years down the line. So I feel like over a period of time I've grown and evolved as a person and as a performer, and now my understanding is very different. My understanding of what constitutes a successful film is the everlasting love. That quality, when a film has that quality, then that's what you call over the ages, and I'm so happy that several days after the release of 83, it's becoming very evident that this is that kind of film, and I'm just too gladdened by that. This is what I live for, the films that live forever are the ones that you want to be a part of. So it's a very, very happy and moment in my life, and I'm full of gratitude, very thankful to the audience, and very happy for my team, and I'm receiving all the love and appreciation coming my way, and I know that ये रोज नहीं होता है, ऐसी पिक्चर रोज नहीं बनती. So I know that for the rest of my life I'll cherish this film and the audience's response to it. ये कुछ अलग ही जादू है. ये मैंने भी 10 साल लगा, ये तो एक्सपीरियंस नहीं किया, तक तो एक्सपीरियंस नहीं किया.
ये इस फिल्म को लेकर कुछ अलग जादू चल रहा है। तो फिर मैं वो पूछूंगा जिसकी चर्चा हो रही है अभी ट्विटर पे। लोग अभी से ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फिल्म के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। जैसा आपने कहा कि लोगों का प्यार सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है, बट द पॉइंट इज एज एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली यू डू क्रेव दिस थिंग। कभी जब आप कोई आर्ट पहली बार फिल्म स्कूल जाता है तो वो सोचता ही मन में, काश मैं ये मंच पे खड़ा रहूं, मुझे अवार्ड मिले। तो ये थॉट आया है मन में बिकॉज नॉट दैट सो मच लव इज कमिंग इन, काश मुझे इसके लिए नेशनल अवार्ड मिल जाए। सर नेशनल अवार्ड बहुत बड़ी चीज है, और अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं हाथ जोड़ के लूंगा, सर झुका के ले लूंगा। एक टाइम पे मैं एस्पायर करता था इन चीजों के लिए। एक टाइम पे मुझे ऐसे भी लगा कि मुझे मिलना चाहिए। I thought I was in the running or that I was a strong candidate, और फिर वो जब हुआ नहीं तो मेरा टूट गया। For which film? फिर I can't tell you that. Okay. But I will tell you that there was an instance, and when it didn't happen, जब वो नहीं हुआ तो फिर मेरा नजरिया, दिल के बाद आपका बिल्कुल नजरिया बदल जाता है, तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। अब लोगों का प्यार और इज्जत वो मेरे लिए मायने रखता है। हाँ, it's like I started valuing the process more, कि I started thinking कि यार पिक्चर पैसे कमाएगी तो मुझे तो उतने ही पैसे मिलेंगे जितने के लिए मैंने काम किया पिक्चर में। तो मेरा बॉक्स ऑफिस से क्या लेना देना। बॉक्स ऑफिस मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या होगा कि मैं अलग टाइप की फिल्में करूंगा, मैं बड़ी फिल्में करूंगा। बड़ी फिल्में क्यों करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि लोगों को थिएटर में लेके आना बहुत जरूरी है, खास करके ओटीटी के जमाने में। ओटीटी बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट बहुत माइंड ब्लोइंग चीज हुई है ओटीटी में। राइटर्स एक्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरे हिसाब से बहुत कमाल की चीज है ओटीटी, और आई एम सो हैप्पी दैट इट्स कम। बट एट द सेम टाइम इट brings the honest entertainers who want to champion the cause of the theatrical, that you have to now make films that have that screen appeal. और स्क्रीन अपील के लिए तो आपको स्केल चाहिए, स्पेक्टिकल चाहिए। वो क्रिएट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, बजट चाहिए। बजट कब आता है? जब आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस करती है। तो उस हिसाब से बॉक्स ऑफिस अगर मिलेगा तो वेलकम है। अवार्ड्स मिलेंगे तो वो भी बहुत, जैसे कि मैंने कहा, मैं thrilled if I get it. My parents would be so proud. I really just live to make my parents proud, and for me personally, how I will receive it is that I will receive it as somebody giving me a pat on the back कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, and that give me confidence, that will give me validation, that will motivate me. It will be positive motivation to propel me forward to do bigger and better things and work more and more as an artist, explore more and more as an artist. So it will do me. I will receive it with all humility. But having said all of these things, I will always maintain that the real miracle is the fact that I get to do this. सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया मैं एक्टर बन गया और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ हिंदी फिल्मों में। मैं हिंदी फिल्म का हीरो बन गया। मैंने संजय लीला भंसाली की फिल्म करी, जोया अख्तर की फिल्म करी, रोहित शेट्टी की फिल्म करी, कबीर खान, मैं करण जौहर की फिल्म कर रहा हूँ। मतलब जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इन लोगों से कभी मिल भी पाऊंगा। मैं जब घूमता था लोखंड वाला ओशीवारा साइड में, तो भंसाली साहब के घर से गुजरता था और ऐसे देखता था मैं कि काश यार कभी मुझे भी मौका मिले। और सोचो मैंने अब 3 फिल्में कर ली हैं उनके साथ, और क्या क्या फिल्में की है, राम, जीराव, खिलजी। So I'm living the dream, bro. I'm just cognizant that how miraculous it is, just the fact that I doing what I'm doing, कि मैं कैसे लालची हो जाऊं कि अवार्ड भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मुझे काम करने को मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है। Thank you for doing such a film and keep believing. Rसल
आज का वर्कआउट मेरे नाम, भाई के नाम. बिल्कुल बिल्कुल. बाय रणवीर, प्लेजर. Thanks, Russell. Bye.